welcome My first day. Ishita and Archita. Ishita's mother, the real force behind Ishita, is also here. So I welcome all of them on behalf of all the students. Come, Ishita. So Ashika has talking and the main factor behind the selection. So Ishita is here, Archita is also here, and our very special guest, Ishita's mother, is here. So I'll always say he some like whenever I go to some interviews and all, तो इंटरव्यूअर से पूछते हैं कि आप टॉपर्स कैसे बनाती हैं या प्रोड्यूस करती हैं या कुछ तो आई कैन से कि मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ बिकॉज each toppers like it's not that only classes help obviously their upbringing I believe that in the success of any person the upbringing plays a very important and the most critical role because what a person is what value system that person has you can achieve success or you can handle failure only with the help of the values. And obviously, the first teacher is always the mother. And our role comes secondary. And that is why our Indian texts, they always say that Janani Janma Bhumi स्वर्गादपि करियसी अर्थात माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है Here they are and I think all of you must be excited so we will first invite Ishita they really waited for you and I believe you were extremely busy I kept on watching your videos and so many interviews. So, Ishita, first, whatever you want to convey, address, you're free to go. ये माइक ये लगा दे, थोड़ा mic. ये लगा हुआ है। You can put, हाँ, ये भी लगा दो। ये कहाँ से आया? अपना? ये उन्होंने भी ये हटा ये दो आप नहीं नहीं ये तो रहना है। ये आप लगा लीजिए। You just put it. Okay. अच्छा हट जाओ मैम प्लीज कहो नहीं नहीं आप इधर आते हो आई होप नहीं नहीं आप बैठिए hello everyone, a very good afternoon to all of you. Feels very nice to finally be here. I'm very sorry I could not make it earlier than this. But finally बहुत अच्छा लग रहा है that I'm finally here. I was also a classroom student because I have done my graduation in economics from Sri Ram College of Commerce, and then I decided to change my optional and take up a new subject because I felt that political science is an optional that really gives you the room to express yourself, and I felt that I have the writing skills or the ability to express myself on contemporary issues, which helped me in paper 1B and 2B. So also a very big advantage, since all of you have taken PSIR, is that you have a significant overlap with the GS papers. So PSIR as an optional really helped me in my paper 1, world history, social issues, in my paper 2, with respect to polity, constitution, international relations, which is a huge area and a big challenge generally, but it was all easy because of my optional. And also in paper 4, because I was familiar with the thinkers, I was familiar with the ideas. So PSIR is really a subject that can help you in your GS papers. So make maximum use of that. You have an advantage.
Coming to my classroom experience, since I did change my subject, I felt that some external help would be necessary in covering this vast optional. It's a very large syllabus, and I was also a classroom student here in 2019. Somewhere in that corner, I used to always sit quietly. So it feels good to be back here. And definitely talking about my sources, I'm sure all of you know by now that the notes of this classroom will cover a lot of the area. About, I felt about 75 to 80% of the syllabus is given to you and is explained to you in detail in the classes. So that does help you to a large extent in terms of syllabus coverage. Ma'am is very open in terms of taking questions, so please do not feel shy to take questions, to ask questions. Even if students are sitting at the back, please ask for that mic, because that kind of an infrastructure is available over here that you can voice your questions. And no matter how many questions, I remember ma'am was always answering all of them for us. So be inquisitive and ask those questions. I think for those who are changing their subject from a different graduation to this now political science, I can be of some help over there. And of course, those who have done their graduation would definitely know more. So I would be happy to take a lot of questions. I'll also quickly take you through my experience through prelims and then mains as well as optional and then the interview stage. So very briefly, all of you know by now, I think I'm sure that I did not clear prelims 2 times. And it was a huge setback. But the paper has been tricky and it has been analytical. Apart from your regular knowledge and your regular sources, please spend some time practicing those multiple choice questions and being present in that moment, in those 2 hours. That presence of mind will take you a long way, and having that analytical mind going, because questions are not coming directly, they are less factual, they are more analytical, so your derived knowledge will take you a long way. So take your knowledge base very seriously and then practice those 2 hours. Do not get up 1 minute before, and do not stay there longer than 2 hours. So sometimes we feel that paper jaldi khatam ho jata hai and humse ghar mein ho jata hai, but over there you have to put up a fight for 2 hours. So at home, always practice for 2 hours. I try to practice between 9:30 to 11:30. If you have your coachings, if you have your classes, if you are working, and if you have any other commitment, you can always change an analog watch ka time to 9:30 to 11:30, because those timestamps are very important in your brain. That 10 o'clock I should be here in my paper, 10:30 I should be here, 11 o'clock I should be here, and by 11:20 I should be wrapping up with my final round. So those timestamps and that psychological aspect of the exam is very important. Quickly moving on to my mains experience. I think answer writing is something that is, all the toppers have always said it, and I will also say it because it is very important. If ma'am has covered a subject or a topic or one paper in class, please go back and look at the questions, because you will be able to be a better student in class. If ma'am has taught a topic, please go back home and see the questions that are coming from that topic, so you can also ask those questions that, ma'am, if such a question comes, how do we answer it, or what should be the format? Because during our time, such questions used to keep on coming, and side by side we always got a flavor of how to write, what should be the introduction and what should be the conclusion. So that would really help if you start that practice early on and stay vigilant. For example, if paper 1A is being covered, go back and check what are the questions that are coming, so that you are more connected in class. As far as GS subjects are concerned, again, writing practice is very important. Long back, Anudeep Durshetty sir had said that write garbage, write poetry, but write. So this is one statement that was always on my study table. Do not wait for that day when you will be perfect, कि आज हमारी पढ़ाई इतनी हो गई है तभी हम लिखना शुरू करेंगे. Start that process. Write bad answers. I have written very bad answers, and that's how I found my mistake when I compared my answers with the toppers. Also in optional, what really helped me was following the blogs of previous year toppers. In the next 1 to 2 days, I will also come up with my blog, and I will put in a detailed strategy, detailed links of all the websites that I have referred to, especially for IR. And as far as paper 1 is concerned,
Please be very central to the language of political science. Try to inculcate that. Have a different approach from your GS papers. Please try to get that academic point of view, those keywords, that language that can take you a long way. So analyze the answer copies of toppers again and again and try to inculcate that language, because knowledge might seem basic, but the language with which we write really takes us a long way. Also about my interview experience, there are a lot of rumors about how the interview process is. There are rumors about how the marking is done, how different boards ask different things. In my personal experience, they might be right to some extent, but in my personal experience, all the myths were busted. I was told that the particular board does not ask any questions related to DAF. But when I went there, a lot of questions were related to my DAF. I was told that the board does not give marks beyond 170 to anyone at all. But that happened differently for me. So there is a lot of over information in the market. Please be very careful about what kind of content you believe. Please have the right mentors, because it can really impact you psychologically, the kind of confidence you can have while giving that interview or facing the board. So don't accept these rumors. Have your own personal experience, have your own journey, make your own mistakes, but also learn from other people's mistakes so that you do not make those mistakes. After a quick introduction of Archita, I can then take on any detailed questions about my strategy, about the mistakes I made, and we can try to keep this session as interactive as possible. But in short, this was my journey of 2 failed attempts at prelims, but at the same time, I never stopped preparing for PSIR. People might feel that this was my first mains, but in reality, this was my third mains, because I was simulating the first 2 mains at home, and I took that attempt very seriously. When my friends were writing in the actual centers, I was just going in a library and writing the same answers on the next day. So I had that kind of practice behind me. So even if you do not clear prelims, please start preparing for mains. Take your mains exam very seriously, because that is the major chunk of your marks. If you get good marks in your mains, then your interview would still be important in terms of your ranking, but you've done the major work. So even if prelims nahi ho raha hai, I know the paper yesterday, there has been a lot of discussion about it, especially about CSAT as well. So we can take those questions up. But bottom line is that failures will be there, fear will be there, doubt will be there. Don't stop. Keep preparing. I will invite Archana to come and just share her views on it. Hello, yeah. So my journey maybe to the core is very similar to Shita's, but there are certain differences that I'd like to highlight that. First is I am a computer engineer from NSIT Delhi. And I worked for a couple of years with Microsoft as a software engineer. And I remember, I think I joined the same batch. It was in December 2018. I just quit my job. I was totally haywire. I didn't know what to do. Somebody told me that Shubhra ma'am is the person to be with if you want to take up PSIR. So I thought that okay, I was just going with the flow. I didn't know what to do. Probably a lot of people might be thinking the same, especially the first timers. For me, the reason with PSR, thinking of PSIR was not something that is similar, that's common to GS, or it's a sporting subject or something similar to that. For me, the core reason for picking up PSIR was because I was interested in IR. Now, my first preference is the foreign service, and I thought it was a good reason to take up PSIR and build my theoretical understanding of the subject going forward. So that's how I took up PSIR. And that's also the core thing that has determined how I go about PSIR. Now, for me, as the man starts with political theory, so I was new to the concept. Being from science background, I always knew Christians core, right? That's what we think. But in humanities and liberal arts, it's all about paradigms, right? Christian could either be 3 or 5, in a way. There are many answers to the similar question. So I think it shaped my understanding about things in general. It was sort of a life
changing experience for me taking a PSIR. You'll understand how and why I'm talking about this. You read things like Plato, you read things like Mill, you also read things like Hannah Arendt. All her theories and all their theories and understandings and thoughts will actually help you understand things way better and will open your horizons. ऐसा होता है ना कि आपको पता नहीं होता है कि कैसे सब करना है even with GS or some things happening outside. You don't know how to make sense of it. I think PSR is going to help you make sense of the larger scheme of things. चल क्या रहा है दुनिया में? Why is it happening this way? So, for example, in one of the first lectures, ma'am had explained how initially back in the ancient ages we started with it was an era of thought. So all good things happened there. In the medieval ages, it was all an era of religion. So religion was the shaping force of everything that happened during those ages. The third era is of science. So the science shaped everything. So I think this particular thing stayed with me and it just helped me make sense of broader things. My strategy is not something that I recommend with prelims, mains, or interview because I mean it's very new for me to share my thoughts, and I don't want to say anything that you come up to me 2 months later, 2 years later, and say, "Oh, you told me something and just didn't work out." For example, for prelims, people say attempt 90 plus questions. I mean that's what's going on, and most of the people do that. Now, the films that I could get through, I attempted 72 questions. 2021, I was recommended to the revenue service. That time also, I attempted 72 questions. This year also, 2022, I thought 72 was a good number, probably it's working for me. So I just stopped attempting questions after 72 and I ended up clearing the exam. This might not be something that people would recommend. I also knew that my accuracy is somewhat decent, so I can take that risk and get through the cutoff phase. Not very, I mean, not in a grand manner, but it will be enough for me to clear the cutoff. So there's something which you will understand only when you write the exam and take a lot of mocks which are actually written by UPSC. So 2019 was my first attempt, just after 4 5 months of preparation. And I just went there and I attempted. I scored around 90 that time. 2020, I wrote mains. So all these papers, which are PYQs for you or anybody who's preparing, were actually mocks for me. I took the paper in the same setting, so I could develop a sense of understanding that okay, 2021 is difficult than 2019, or 2022 is also difficult than 2019. So that dynamic clarification of cutoffs also used to happen during the paper. Now, this you'll only understand if you start solving the paper at your home in a very exam-like atmosphere, same timings, 9:30 to 11:30. I think Shita stressed on this. And I had suffered because of this because 2019 I used to study till late night. So 2019 when the prelims happened and I went to give the paper, I was sleepy. At 10 o'clock I felt like keeping everything at bay and just sleeping. I wanted to put my head down and just sleep because my mind wouldn't just work. I needed my brains to recollect all the quality and history and who I had stuffed in my mind for 4 months. And I just couldn't understand what the question is asking. So there was a question on Minority Benefit Act and it talked about something like a 26-week chutti that people get. And I couldn't calculate it into weeks because I was just so weak with understanding and weak at something. And it was like a slap on my face because I was always good at math and I couldn't convert weeks to months to days. So that's when I understood that sleep and keeping your cycle tuned to the UPSC cycle is very important. Now, some people do operate without sleep. Sleep is something which is, I mean, people drink coffees. I was in an engineering college, so people used to talk about all-nighters and, we're drinking coffee and giving exams. Now, this is something which did not work for me. So, I would recommend that self-awareness is something that this exam teaches you, and it teaches you in a very brutal way also. Because I wasn't that aware to understand and learn from people's mistakes. I think Shita also talked about learning from people's mistakes. I did not learn from people's mistakes. People kept saying that write answers, you have to write answers. I thought, no, I'm good at, I've always been good at writing.
I was the editor of my college newspaper. I am going to write. All that is important is to collect as much content as I could get. I'll just vomit everything on the paper one fine day. But that did not really happen in 2020 means I did not know what to write because all this while I just focused on collecting a lot of content. But how do you streamline that content? इस इतना सारा जो दिमाग में भंडार पहले आया था उसको आप लिखोगे कैसे, right? That you have all the ingredients but you don't know how to cook the dal. So again, I learned from my mistake in 2020 means and I used it in 2021 means. So my understanding, my experiences were all incremental and learning from myself. I would say there are a lot of toppers which come to you, and I frankly, I'm not at the other side of the table. But back then I used to say, what are they talking about? I didn't really understand. And I see what they have to talk about when I'm at a stage. Right now, अभी पढ़ लेती हूँ मैं. जो toppers बोलेंगे वो ऐसे एक महीने बाद देख लूँगी. And that एक महीना never came. I did not really listen to topper talks. I thought कि पता नहीं सब same आपको बोल देते हैं. मैं क्यों कर रही हूँ ये? So I would just say that sometimes toppers do give a lot of advice. And it's wiser to do what the other people are doing sometimes, right? Majority is talking about answer writing. You are no big dude, please write answer. This is something which I learned the hard way. I think Tishita, and before that, all the toppers, there was Shruti, Andeep sir, everybody is focused on answer writing. Just start writing answers and we'll learn and we'll customize your answers. For example, for me, PSIR was poetic. So I used to write a lot of scholars. I used to collect these editorials. Last year, since I was done with everything, I didn't know what to do more to get through the exam. So I took up, so the Telegram channels have this all editorial kind of a PDF where editorials from most national dailies are there. So I used to read the Hindu in just 30 minutes or something. I used to take 2 hours and read all editorials which made sense to me. Most of them, they were based either on IR or it was something on judiciary is doing something, or it could be an eco editorial. So mostly the Hindu, Indian Express, Hindustan Times, all these editorials sort of helped me understand more and helped me learn more things. And that sort of taught me another thing that being curious and having this knack to learn new things. It could be anything. My brother is doing law, so I used to talk to him about CPC or IPC and stuff like that. The bottom line is that be curious. Do not think that okay, this NCERT तक ही कर लेते हैं, आगे का जरूरत नहीं है. Just wherever knowledge is being thrown at you, it could be on Twitter, it could be on Facebook. Last time there was this question on the mushroom, the gucci, right? And there was this TV actress who would put a photograph of her with the vegetable because it's a Himachali vegetable. So somebody who's following her would have actually guessed that. Last year I just saw the question. It's something to do with keyboard. There was a question on IR. There were 3 places and 3 countries you had to match. And there was this one question on Kivu, which is a place in Congo. Now, I happened to read an obscure book because of my interest in IR, which talked about the Congo wars. So, I did not know that this is how it's going to come back to me, and I'm going to use that knowledge here. So, it's all about opening your horizons, widening your spheres, moving beyond your comfort zone, and just learning as much as you can. It could be from Shura ma'am, it could be somebody talking in the metro about something, it could be on Twitter. I used to do a lot of Twitter stuffing even during the classes. I'm sorry for acknowledging this here, but I mean, it used to be something which was interesting and I could learn things from there. So just do not restrict yourself to the core books. I'm just saying this, take this with a pinch of salt. It worked for me, it might not work for you. But just incrementally keep like वो पुट्टी होती है ना, पहले हम घर बनाते हैं तो सिर्फ पुट्टी करते हैं, फिर एक पीओपी चढ़ती है, फिर पेंट चढ़ता है. So once you're ready with the skeleton of your building, just keep using more Asian paints, and keep understanding more about things. And I think this is not just limited to the exam. Even later on, the exam is just not the end, right? It's the starting of something new. So if you are curious to learn more things, I think it's going to help you not just in UPSC but even elsewhere in life.
that's not a sermon that I'm giving here. It's something that I also learned from partially or mostly from my own mistakes, and then understanding things from other topics. So that's my 2 cents. I still not articulated my thoughts. I was just told to talk to the students and inspire them in whatever way I can. So these are my 2 cents. So I hope it's useful for even if it's useful for even a small percentage of you, I think it's going to be worth it. Thank you. I think we should open the floor for the questions, and you can you can tell any questions you want to ask. So both of them are here, and if you want to ask question from the mother also, she can ask it. Right? Uh, so yes, let's not waste time, and just quickly with whichever questions you want to ask. Do you have questions in mind? Sorry. Yeah. Or it's not necessary, so yeah. Yeah. If there's a lot of speech around and we get 10 minutes, just for me. Okay, thanks. Congratulations to the toppers and thank you for your words. So my question is like we are beginners and there's a lot of information around. Like yesterday was my first day in ORN and I'm hearing about all the papers and how unpredictable they are and it's really scary. So how do we start with a fresh mind and what are the strategies we should adopt the I fresh ask. both of them? Okay. So yes, Ishita, would you like to answer? Hello. Am I audible? I think the mic is still. Am I audible? Is it? You take this. Akshay, hello. You have another one. Is it not connected? This is for the recording, I think. कौन सा चल रहा है? ये चल रहा है? Audible है? Hello. Yeah. So yes, as a fresher, there's a lot of material out there, and it can be very confusing. But of course, it's very important to limit your content. I think just learning this is very important in this journey because it's going to be a very long journey. And current affairs is also something that will keep changing, keep coming up every 3 months. It changes. So learn how to limit your content. One source, one newspaper is sufficient. I think one website for current affairs, any website should be sufficient. I don't think you need a magazine apart from that. But if you still feel insecure, you can just go through the index of the magazines that okay, ये सब मैंने cover कर लिया है. So that is with current affairs. With political science, I think start with the notes that you're making in the class and keep a track of the syllabus. So if you feel there's some point that you want to cover in more detail and you want to know more about it, so you can add to that, but this should be your base and limit yourself to this. If there's any particular topic in the syllabus that you want to add more and you feel that it's not sufficient, then go for it. But learn how to limit your content always. So I think I share similar views about ORN as you shared. I got scared when I used to come to Shubhra ma'am's classes and I decided I'm going to prepare from home. I can't take this pressure to, be surrounded with everybody is talking the same things. There's prelims, everybody will for a week talk about prelims, then there'll be mains. Everybody's going to talk about mains. So I would say regarding content, I have a slightly different opinion with respect to Ishita's. I would say it's important to limit your content, but it's more important to limit the source you are reading from. People say limit your resources, limit your sources. I would say make one notebook of, say, polity, a page on judiciary. So, whatever things you find from the newspaper, from a book. So, I read a book on constitution by a lawyer, Supreme Court lawyer called Gautam Bhatia. He regularly writes for the Hindu also. People would have come across Transformative his constitution. Yes, ma'am, the transformative constitution. So I found something which is, say, related to judiciary there. So on my judiciary page, the notebook that I had, I just appended things. And while doing the mains preparation after pre to mains, I made the broader sense of it. For example, there'll be one, I'll just give an example to sort of substantiate what I'm trying to say here. Judiciary is a big chunk of PS paper 1B also and of GS2 also, right? So there'll be some article which will be talking about, say, judicial infrastructure.
There'll be another article which will be talking about judiciary becoming e-judiciary. There'll be another article which will be talking about basic structure. So coming from my engineering background, I don't know how helpful it will be for somebody, but I did a hardware software approach. That was something that I could relate to. So the hardware of judiciary is what? The infrastructure. Does the judiciary have enough washrooms for female judges? Does it have a lot of rooms for the cases to be heard? Does it have the internet infrastructure to go online? So that's the hardware of judiciary. What's the software of judiciary? The judges. Are there enough judges? Are the judges accountable enough? Are they following the constitution, or are they going into judicial activism? Or what are the cases which shape the judiciary? There are some cases where judiciary imported a lot of ideas from abroad. For example, the Vishakha guidelines, they are basically an abroad concept. So the judiciary used that. So that's the software part of it. Now you keep adding these things to your notes, and I think when you're preparing for mains, everything will start making sense to you. So can you say the mistakes you have done and you want that we should not do such mistakes? Yes, I made a lot of mistakes, and I think we all need a lot of humility when we are evaluating our mocks or our final papers. So please sit with an attitude where you are only finding your mistakes. Don't be like, हाँ ये मैंने पढ़ा था, ये तो मुझे आता है, कोई बात नहीं, next time silly mistake नहीं होगी. So have that humility, नहीं मैंने बहुत बड़ी गलती की है, आती हुई चीज़ गलत की है. So that sort of an accountability really helps you in your mocks. And the two prelims that I did not clear, I always kept the question paper on my study table. One as a reminder of miles to go before I sleep, and two, also just always glancing through the questions, because even in one question you can find at least 5 to 6 mistakes. Okay, I might not remember this. First issue is memory. I forgot something, so I need to revise. Second issue is I may not know the exact thing, but I did know the options. I could have eliminated. Third thing is that maybe I was tired by the time I came to this question, so I was not fighting. You have to be in that firefighting spirit for 2 hours over there with 100 questions. And lastly, in my third attempt, I wrote on my question paper that this is a CSAT paper. So this is not just knowledge, it is your derived knowledge, it is your presence of mind, it is your analytical abilities, and you have to appear like that. So these were some of the mistakes. Other than that, one very important thing that helped me in my prelims was all the toppers say previous year questions are extremely important. I also did previous year questions, but my attitude was different. I felt इनके answers तो मुझे याद हो गए अब, इतनी बार देख चुकी हूँ. But that's not what you have to do. First, you have to solve it. Second, you have to see the language of it, because we can see the statements are very long these days. So understand the language that is being used, and third, use that as your universe. That these are the broad areas where UPSC usually goes. Analyze every option and make a separate notebook for previous year questions or a separate file online. And I think that will help you in containing the universe of it and understanding the language of it. And at least last 5 year papers, this year until 2019, you will see the analytical questions are increasing and factual questions are lesser. So be in that state of mind where you have to analyze. So that is your key. Previous year questions, I did them more than 40-50 times. Not in a row. कभी भी बैठे बैठे देख लो questions कि अच्छा ये तब पूछा गया था. Because every time you go through it, you will find something new. You will find a new way of solving the same question. Talk to all of your friends. I always ask my friends that how did you solve this? So they'll tell you a new method. So don't limit yourself कि मुझे ये question आता है. एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने के 10 तरीके होते हैं, 10 तरह की नॉलेज हेल्प कर सकती है. तो प्लीज हैव दैट ह्यूमिलिटी टू वन फाइंड योर मिस्टेक्स एंड टू आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड्स इवन इफ you know things. Now, इधर से ले लो. Yes. Yes. is taking test series a good idea? And shall it be taken in the beginning phase when you have not done anything, or should it be done after you have completed the entire syllabus? So I'll answer this question for both prelims and mains.
and mock interviews also, तीनों stages पे. Firstly, for prelims, I think again previous year questions will help you identify which are the right test series, and because you will understand कि ऐसे questions नहीं पूछते हैं या ऐसे questions पूछते हैं. This particular test series is on the right path, and one is this, and two is the kind of simulation in that environment कि you sit there, बाकी लोग exam दे रहे हैं, वो nervousness contain हो जाती है. So in these two ways, please do take test series. Don't wait to finish your syllabus. You can start with sectional tests, and you can just sit with a baseline. Ki, okay, today I stand here. 2 months later, I'm going to improve. So you can have those targets as well. For mains stage, again, don't wait for that perfect answer. I always say start making your perfect answers. One humble request to ma'am. On behalf of all the aspirants, ma'am, I feel that there has been a little bit vacuum in terms of test series for PSIR. I know your crash course is there, but it would be very helpful for all of us if we can have a dedicated 6 to 8 test series. And that's what I felt with my peer group, that if we have a dedicated series for people who are writing mains, apart from the crash course, that can really go a long way. Thank you. And that 24 tests series. So we do conduct 17 tests before. Okay, ma'am. Ma'am, but a short series just for those who are writing mains. 7 to 8 tests, bus. In the crash course, it is included. Ma'am, without the crash course, we want. See, it is test series itself, because we focus only on test. But I take the classes which we do on structuring of the questions. So crash course उसका नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि कुछ current issues उसमें add होते जाते थे. और initially the number of, like, mostly the students used to be from science background. तो उनको लिखने में बहुत दिक्कत आती थी. तो I started taking previous year questions. But वो है टेस्ट सीरीज ही, वो एक एक्स्ट्रा जस्ट आई डू कि कई लोगों को लगता है ना कि सुना हुआ तो वो एग्जाम में याद हो जाता है, तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है. चलो, सो नाउ नेक्स्ट या Ma'am, how can we use PSI knowledge in GS answer? You take this. he wants to use political science answers, knowledge in general studies. Okay, so Ishita, you want to answer? I think Archita can take this. I think the demand of PSIR as an optional paper is sort of different from what the GS2 paper demands. So you can just take the PS2, the paper 1B part, only the factual part of the main arguments. But I think simulating the entire, the way you write PSIR, which is in paragraph form with a lot of theory, might not be a good idea for GS. Because GS is, you talk about a lot of things in lesser space. तो उसमें इतना elaborate अगर आप लिखोगे तो making a lot of points. तो जितने मतलब बीच में आंसर लगेगा कि बहुत ज्यादा पता है, तो आई थिंक अप्रोच डिफरेंट रखेगा जीएस के लिए और पीएसआर के लिए. Excuse me, ma'am. It is question towards Ista ma'am. There. Yes. मैम आपने तो प्रीलिम्स 2 बार क्लियर नहीं किया और अभी क्लियर कर लिया, तो अब ये बताइए क्योंकि सक्सीडिंग ईयर्स में क्या हो रहा है कि प्रीलिम्स कठिन होता जा रहा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मेरे मन में भी यही सवाल था कि टॉपर्स का तो निकल गया और अब हमारा क्या होगा. तो जैसा मैंने कहा कि पिछले 5 साल के पेपर्स थोड़े से एक डिफ़िकल्टी लेवल अलग है एंड एनालिटिकल ज़्यादा है, तो आई थिंक 2019 से 2023 तक का पेपर आप बहुत ज़्यादा फोकस उसमें उसको रखें, बहुत बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही समझ आएगा. जैसे मैंने कहा, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो वो नए नए तरीके ढूंढें. एक नॉलेज बेस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो MCQ सॉल्विंग का एप्टीट्यूड वो 1 साल में बिल्ड करें. मेक इट ईजी फॉर योर सेल्फ. दिन में रोज़ 5 क्वेश्चन ज़रूर करें, 3 क्वेश्चन करें, लेकिन हमेशा PYQ से टच में रहें.
सो वही हेल्प करेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि कंटेंट तो इनफाइनाइट है, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता, लेकिन इट हेल्प्स यू स्टे ग्राउंडेड, एक बेस लेवल बन जाता है PYQ से. I'd like The to next add- question is, ma'am. One I'll second. just add something for PYQs. इशिता ने बताया कैसे PYQs को सॉल्व करना है. उससे एक स्टेप आगे, if you have time, is to take that question, उसके सारे options को गूगल कर लो. For example, last year there was a question on military coups, I think, on Tunisia and other countries in North Africa which were having a military coup. And I think कल भी यही सवाल different version में आया है. तो यू विल नो दैट UPSC coups पे फोकस करती है. सो यू अंडरस्टैंड कि अगर अच्छा आप कहीं और कुछ ऐसा होता है पॉलिटिकली किसी इम्पोर्टेंट कंट्री में, इम्पोर्टेंट कॉन्टिनेंट में, सो यू विल नो कि ये चीज़ जो है हमें पता थी न्यूज़पेपर से या कैसे भी. और किसी चीज़ को लाइक जो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मिलिट्री को इज द क्वेश्चन दैट इज आस्किंग, जो कोर है उस क्वेश्चन का. बट साथ में उसने और भी हमें कितने ऑप्शंस दे दिए कि टूनिशिया में क्या हो रहा है या माली में क्या हो रहा है. सो देन अनदर क्लू दैट UPSC इज ट्राइंग टू गिव यू इज कि ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट कंट्रीज में क्या हो रहा है. सिमिलरली कुछ जुडिशरी पे क्वेश्चन है अमेंडमेंट्स रिलेटेड. सो अगर ऑप्शंस में है फर्स्ट अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, सो नेक्स्ट ईयर या इवन आफ्टर दैट वो अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. बिकॉज अगर मैं पेपर सेट कर रही हूँ और मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय पिछले पेपर्स देखने के लिए, तो मैं उसी से बहुत अंदाज़ा लगाऊंगी कि नेक्स्ट पेपर में क्या देना चाहिए. सो अब मेरे को अगर बिल्कुल काम नहीं करना है तो मैं 42nd अमेंडमेंट उठाऊंगी और उसी से कुछ क्वेश्चन बना दूँगी. तो इफ़ यू नो कि 42nd पिछली बार कभी आया था, तो आप उसको एक स्टार बना लेंगे कि ये चलो बाकी अमेंडमेंट्स याद हो ना हो, 42nd पक्का करके जाऊँगी, क्योंकि उससे सवाल आना ज़्यादा प्रोबेबल है. चाहिए Ma'am, the next question is that most of us ये हमारे क्लास में सभी बिगनर्स हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में. तो 8 क्वेश्चन लिखने के लिए करीबन हम लोगों को 3 घंटे 4 घंटे लगने लग जाते हैं. तो ये सिनेरियो कब बदलेगा? बदलेगा भी तो नहीं. क्या बोलूं मैं? दोनों की हमें हमें 7-8 4 घंटे लग जाते हैं 8 आंसर्स लिखने के लिए. ये सिनेरियो हमारा बदल पाएगा कि हम टाइम लिमिट में कर पाए. जी बिल्कुल, मैं भी आपकी जगह में थी कुछ साल पहले कि एक आंसर लिखने बैठी तो बस ऐसा परफेक्ट आंसर मैं लिखूंगी, 1 घंटा लगा के 10 मार्कर लिख रही थी मैं. एंड मी एंड अर्चिता हैड कनेक्टेड इन 2020 थ्रू सम टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन, एंड दैट्स व्हाट आई मैसेज्ड हर कि अर्चिता पेपर ख़त्म कैसे किया. तो ये बिल्कुल, ये बहुत इनसिक्योरिटी लेजिटिमेट है और ये रहती है. कोई बात नहीं, शुरू में नहीं हो रहा तो धीरे धीरे, अभी 1 साल है, 1.5 साल है मेंस लिखने में, आपको 1.5 साल टाइम है, तो द काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट जो आप बदलाव का इंतज़ार कर रहे हैं वो आएगा. एंड थोड़ा सा पेशेंट रहे, कंसिस्टेंट रहे, रोज़ लिखेंगे तो क्यों नहीं टाइम इम्प्रूव होगा. रोज़ करिए, एक आंसर लिखिए बस रोज़, एंड अपने फ्रेंड्स से भी डिस्कस करते रहिए. मेंस का जैसा भी एक्सपीरियंस अर्चिता का रहा था, मैंने बहुत कुछ सीखा था, क्योंकि सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने मेंस नहीं लिखा था. तो आई ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हर कि टाइम मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है, पॉसिबल है भी या नहीं है. तो वो पॉसिबल है, और लेकिन तभी पॉसिबल है जब आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे. मैंने आंसर राइटिंग के बारे में बता ही दिया था कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था. तो 2020 में आई लेफ्ट 60 मार्क्स ऑफ PSIR अनअटेम्प्टेड, 0. वो एग्जामिनर शायद गुस्सा होकर माइनस जरूर दे देता उनके लिए, बट पॉजिटिव का कोई स्कोप नहीं था. तो उसके लिए आई थिंक वी कनेक्टेड इन 2021. तो थोड़ी सी चीटिंग स्टार्ट कर दी. अगर पेपर में 10 मार्कर्स आते हैं 10 और 3 सेट्स आते हैं 15 एंड 20 के, तो क्वेश्चन पेपर को डिवाइड कर लो. आज आधा करेंगे, कल आधा कर लेंगे और 1.5 घंटे में उसे कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे. तो वो धीरे धीरे, जैसे स्प्रिंट तो एकदम से नहीं भाग सकते हैं ना, फर्स्ट यू स्टार्ट वॉकिंग थोड़ा सा, फिर थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे. तो थोड़ी सी चीटिंग कर लो, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि चीटिंग कर सकते हैं. तो मैं वो 3 घंटे लेके बैठी रहती थी और इतना इनर्शिया आ जाता था कि 3 घंटे तो नहीं लगाएंगे और पेपर में देखेंगे कैसा होगा. और फिर देखा पेपर में कैसा हुआ, then I realized कि चलो 1 घंटा ही लिख लेते हैं, कुछ तो लिख लेते हैं.
Might. When we enter in ORM, like when we are from different account, as you said, so it's like we enter in some different work. So you have said so many things, but I wanted to know that when in the starting phase of your journey, when you were going in a coaching and your GS was also going on. So in the starting phase of your preparation, what you were doing? You were doing something different, or you were just writing the map notes, or you were adding something in it. Initial phases of preparation, managing class, notes, revisions. Huh? So this is for PSIR or in general? For GS. तो for general I would say कि शुरू में कुछ समझ नहीं आता है. I had left my job 10 दिन बाद में मैम के पास आ गई कि मतलब आपके पास ही आते हैं, सब आते हैं, मैं भी आ गई हूँ. पर नहीं आगे क्या होगा? GS के लिए I didn't take any coaching क्योंकि frankly ऐसा नहीं था, पता नहीं मतलब I did not have any opinion about it. It was just that I was too lazy और दिल्ली से रोज यहाँ तक आना was too much for me, वो भी सर्दी में. तो I thought घर पे बैठ के करते हैं. I had a different no, I think I shouldn't be using the word strategy. I just had a different approach. I thought of attempting 2019 का prelims 4 महीने बाद ही. तो मैंने पहले प्रिपरेशन करी विद NCERT और जो सब लोग कहते हैं उससे. और क्योंकि मैं बहुत ही सीरियसली लेने लग गई थी 2019 का prelims which was supposed to be a tester for me. तो उससे मेरी prelims की NCERT वाली चीज घिस कर थोड़ी सी दिमाग में फिक्स हो गई थी. उसके बाद आई थिंक आई स्टार्टेड मेकिंग मोर सेंस ऑफ इट कि कैसे अब जो दिमाग में बिठा लिया है उसका आगा पीछा क्या है. फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में से पता चल गया है क्विट इंडिया मूवमेंट है, उससे पहले कुछ मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस है, उससे पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है. बट क्यों क्या कैसे हो रहा है ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग वो बाद में हो. तो आप स्टार्ट करने के लिए बस दिमाग में कुछ समझ ज़्यादा नहीं आएगा बट जैसे स्ट्रक्चर रेडी करते हैं, जैसे मैंने पहले ही बोला, बस पहले ईंट लगा के स्ट्रक्चर बना लो. फिर जब पेंट वगैरह करोगे तो अपने आप बिल्डिंग सुंदर हो जाएगी. यू जस्ट हैव टू कीप यू हैव टू बी पेशेंट और बस रोज मजदूरी करते रहो, फिर हो जाएगा एक दिन सारी बिल्डिंग कंप्लीट. मतलब जब तक अभी बैच चल रहा है तब तक फोकस करो क्लास में. जैसे आप क्लास में कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोगों को क्लास में ही बताई हुई बात समझ में आ जाती है, फिर वो बाद में जाके घर नहीं पढ़ते हैं. कुछ लोग मेरी तरह होते हैं जो लेजी होते हैं, उनको समझने की जरूरत होती है बट वो पढ़ने फिर से जाके पढ़ना नहीं चाहते हैं. और कुछ लोग होते हैं जो बहुत डिसिप्लिन होते हैं, जो क्लास में भी सुनते हैं, क्लास में फिर पढ़ते भी उसे, फिर घर जाके भी उसे वापस पढ़ते हैं. तो इतनी अवेयरनेस रखिए कि आप कौन सी कैटेगरी में हो और कौन सी चीज आपके लिए वर्क कर रही है. अगर आपको लगता है कि आप घर जाके चिल करेंगे और जीएस कर लेंगे, PSIR अगले दिन कर लेंगे, इट्स वर्किंग फॉर यू, समझ में आ रहा है अगले दिन मैम क्या समझा रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया. अगर आपको फिर से उसे पढ़ने का मन कर रहा है वो करिए. आई वुड जस्ट से कि इतना रिजिड जो हम आपके बोल रहे हैं कि हाँ हमने ऐसे किया था, वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि 4 दिन की परफेक्शन होती है, 40 दिन हम भी लेजी होते हैं. बट वो बताने के लिए हम ये नहीं बोल सकते हैं ना कि हमने 40 दिन मस्ती मारी थी, सिर्फ 4 दिन ढंग से किया था. तो आई थिंक हम एक बहुत परफेक्ट इमेज सेट करते हैं क्योंकि हम आपको बताना भी कुछ गलत नहीं चाहते हैं. बट वो परफेक्ट मतलब एटलीस्ट फॉर मी वो जो दिमाग में होता है कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वो प्रॉब्ली 30-40% टाइम्स होता है. बाकी टाइम नेटफ्लिक्स और बाकी चीजें भी होती है. जितना whatever is floating your boat, I would say आपको लग रहा है कि आप कर पा रहे हो, आंसर्स लिख पा रहे हो, धीरे धीरे कुछ नया सीख रहे हो, बहुत बढ़िया. And what I would ask question, we your time have explained that from the counter plate, you to limit your sources. Yes, go ahead. तो आपके कितने सोर्सेज हैं अभी? एक क्लास नोट्स होंगे और मतलब अभी क्लास नोट्स है, फिर मतलब जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हो वो भी अपनी बोले देते हैं, फिर और जैसे कोई टीचर आ रहा है आपको कुछ बता रहा है उसका तरीका तो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन. सो बी वेरी स्मार्ट अबाउट इट. एंड अभी क्लास नोट्स है, यही फाउंडेशन है आपका, तो इस तक लिमिट करे पहले. जब ये अच्छे से हो जाए, जो जैसे अर्चिता ने कहा उसने एक पेज बना लिया था जुडिशरी के लिए, तो बेसिक क्लास नोट्स का एक जुडिशरी का पेज बना ले या स्टेट का पेज बना ले, जो भी टॉपिक है.
और बाद में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लगे कि हाँ यूज़फुल रहेगी, तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है कि आप उसी पेज में जाके ऐड कर दें. तो दैट्स हाउ यू लिमिट योर कंटेंट बाय जस्ट हैविंग दैट वन पेज पर टॉपिक, वन सोर्स पर टॉपिक. इसके लिए आप एक और चीज़ कर सकते हो, बेस पेन ब्लू हो गया, तो जो मैम ने बताया या जो भी आपके बेस नोट्स है एनसीईआरटी जो कोई छोड़ के नहीं जाता है उसको ब्लू पेन से लिख लिया. फिर मेरे को कुछ और दिख जाता था एडिटोरियल में, तो टू राइट विद रेड पेन, फिर ग्रीन पेन, तो मुझे समझ में आ जाता था कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. ब्लू वाली चीज़ बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो तो सब पढ़ के जाएंगे. रेड वाली चीज़ मुझे किसी अच्छी किताब में पढ़ ली मैंने, मेरे को अच्छी लगी, मैंने लिख ली. ग्रीन वाली चीज़ कहीं और, मतलब बेसिकली और अंडरस्टैंड कि जितना आप उसको पढ़ते जा रहे हैं उतना ब्लू वाला स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, रेड वाला ऐड होता जा रहा है और ग्रीन वाला भी दिमाग थोड़ा थोड़ा लर्न करता जा रहा है. Just a minute. I think we'll take. कुछ सोते रहते हैं मतलब जाके. कुछ लोग वहाँ के लिए फाइट करते हैं, हमें पीछे ही बैठना है. Even if we tell them कि तुम्हारे लिए स्पेशल लेवल होगा. हाँ बोलिए. एक से माइक के साथ बोलना पड़ेगा, इनको बोलना. Ma'am, based on optional for you only read ma'am notes or any other additional books? Have you read any books for PSIR? So PSIR के लिए notes are sufficient to begin with. As I said, 70 to 75% काम आपका हो जाता है, वो baseline, वो foundation setup हो जाता है. I say 75%, this can also be 100% for some people, but I wanted to keep that room of 25% जहाँ मैं अपने opinions, अपने views, अपने ideas, अपने notes जो मैंने editorial से collect किए हैं, चाहे वो paper 1B हो, चाहे वो 1A के ideas हों, अगर मुझे लगता था कि कुछ मैं अपना एक element add कर सकती हूँ जो कि थोड़ा सा that can give me an edge because so many people take PSIR as their optional. So I kept that room of 25% wherein I would add things from test series जो मैम की क्रैश कोर्स में जितना मटेरियल मिलता था उसमें से अगर मैं जितना भी कर पाती थी तो मैं ट्राई करती थी कि उसमें से मैं कुछ ऐड कर लूँ जितना हो पाए, क्योंकि ऑलरेडी द सिलेबस इज़ सो मच. एंड जीएस की इन्फॉर्मेशन जितने मैंने पढ़ी है उसमें से मैं कुछ ऐड कर पाऊँ PSIR में. सो हमारी इन्फॉर्मेशन उतनी ही है, बस हम इधर उधर ऐड करते रहते हैं अपने आप को थोड़ा सा एक एज देने के लिए. Hello. Ma'am, my question ठीक है, हाँ बोलो. तो मैम आपका थोड़ा थॉट प्रोसेस के कारण थोड़ी डिसिप्लिन में चेंजेस आए थे क्या? After selection, you became relaxed, or you were more. Selection you mean last year? Last year. Yes ma'am. I would say थोड़ा सा relaxed भी थी because I knew कि चलो जो मैं कर रही हूँ that's making sense to people. मैं अकेले ही नहीं अपने रूम में कुछ कर रही हूँ और वो उसका कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है. But I was dejected थोड़ा सा, let me be honest, because I didn't know कि यार NCERT बोलते हैं, इतना बोलते हैं, ये तो मैंने कर लिया, शायद थोड़ा ज़्यादा ही कर लिया, but अभी उतने मार्क्स क्यों नहीं आए हैं. So I think later on I did understand कि कुछ चीज़ें कमी थी. For example, for GS3 I thought लोग facts पता नहीं कैसे लर्न करते हैं, इतने numbers मुझसे लर्न नहीं होंगे, इसका कोई मतलब नहीं है, बस GDP याद है काफ़ी है, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा मुझसे. But then I understood that I can't decide what's of my liking, right? बाकी लोग अगर facts लिख रहे हैं तो मुझे भी लिखने ही होंगे. तो मेंस के लिए just before GS3 for example मैंने क्या किया, all things good करके एक पेज बना लिया, एक नोटबुक ले ली जिसके अंदर सिर्फ फैक्ट्स लिख दिए और कुछ नहीं था उसमें, 5-6 पेजेस थे और सिर्फ फैक्ट्स थे. और फैक्ट्स भी आई एम फ्रॉम, मैं हर चीज़ में लॉजिक ढूंढती हूँ तो उसको भी बहुत लॉजिकली लिखा. जैसे मैंने जुडिशरी का एग्जाम्पल दिया कि अगर मैं कोर्ट में जा रही हूँ सबसे पहले चीज़ देखूँगी इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं, जज आए हैं या नहीं आए, पर या फिर एजुकेशन है, पहले स्कूल है या नहीं है, स्कूल में कितनी फैसिलिटीज़ है, इज इट एक्सेसिबल, टीचर्स कितनी है, टीचर्स आती हैं या नहीं आती हैं, बच्चे, अब ये सब हो गया, सब हार्डवेयर रेडी है तो सॉफ्टवेयर इज बेसिकली आर किड्स इवन लर्निंग थिंग्स. तो उसके एसर रिपोर्ट है या कोई यूनेस्को की रिपोर्ट है, उससे समझ में आ गया कि व्हाट्स द वर्किंग, स्कूल के बाद उसकी चल कैसे रही है. ऑल दीज थिंग्स आई पुट इट ऑन अ पेपर और पेपर मेन से पहले आई जस्ट रिवाइज्ड दोज फैक्ट्स. आई थिंक इसी वजह से शायद इस बार थोड़ा बेटर रैंक आ गया पिछली बार से.
तो आई वुड जस्ट से कि भाई इंक्रीमेंटल बेसिक्स करो, फिर उसके ऊपर एक और कोट करो, फिर एक और पॉलिश, और ऐसे ऐसे करके दैट्स हाउ आई लर्न। क्या होता है ना कि प्रीलिम्स के बाद और मेंस तक एक शेड्यूल कैसे ऑर्गेनाइज करें, मतलब रिवाइज कैसे कर सकते हैं। तो अक्सर कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं कि रिवीजन शेड्यूल कैसे करें, जीएस कर रहे हैं तो कौन सा छूट रहा है। तो ऐसा कुछ आपने टाइम डिवाइड करके किया या कुछ एनीथिंग प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच के टाइम का बेटर यूटिलाइजेशन एग्जाम ओरिएंटेड कैसे करना है। फिर बहुत सारी चीजें करंट में फिर डेवलप हो जाती हैं, तो उस समय फिर से करंट को क्या मतलब, या करंट ले कहाँ से ले। तो इस दौरान क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे जस्ट प्रीलिम्स हुआ है तो वो देने वाले होंगे मेंस, तो वो कैसे टाइम एंड कंटेंट मैनेजमेंट करें प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। So before I wrote my mains, क्योंकि 2 प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुए थे, तो बहुत सारे फ्रेंड्स से मैंने सीख लिया था कि ये टाइम बड़ा क्रूशियल होता है। अगर इसमें कुछ भी मिसमैनेजमेंट हो गया तो अटेम्प्ट जा सकता है। सो इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई हैड स्पोकन टू माय फ्रेंड्स हु टॉक्ड अबाउट 1 टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द 3 मंथ्स एंड 2 टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम। पेपर नहीं छूटना चाहिए हमारा वहाँ पे। तो ये 2 चीज़ें मेरे दिमाग में स्ट्रैटेजी में आई थिंक 2 साल से बना रही थी कि जब मैं मेंस दूंगी तब मैं ऐसा करूंगी, बस वो मौका नहीं मिल रहा था। तो आई ट्राइड टू कीप अ वेरी फिक्स स्ट्रैटेजी फॉर दोज 3 months एंड आई वाज वेरी क्लियर अबाउट इट बिकॉज आई हैड प्लान्ड इट इन एडवांस दैट जब भी ये टाइम आएगा। तो when the 100 odd days came to me, of course you can then divide your marks. Out of the 901 marks I have, 313 come from my optional. So you can see the weightage of optional in your final marks. So in 3 months, 1/3 of my time can be given to my optional. Similarly, for the 4 papers of GS, I have gotten around 440, I don't remember exactly, but somewhere in that range, 450 or 440 hai. So you can see the proportion of the marks reflecting in the final paper. So similarly, every day, try to keep a dedicated, like I divided my day into 3 parts, starting the day with newspaper, always for my mains paper, newspaper, then newspapers, notes, and all top websites ki kuch chal raha hai ya nahi. Next 3 hours for my GS preparation, 1, 2, 3, 4 essay, जो भी मुझे करना है. And last 3 hours always for PSIR, that चाहे paper 1A हो, 2A हो, 1B हो या 2B हो. This was my day. Talking about 3 months again, so I always pasted the calendar in front of me, so I have that vision that these are my days. And जो भी मैं tests plan करती थी, मैं calendar पे पहले लिख देती थी कि एक orderly fashion में अगर 8 GS के test देने हैं और कम से कम 4 ऑप्शनल के टेस्ट देने हैं, 12 टेस्ट है, इससे ज़्यादा मैंने 16 ही टेस्ट दिए थे, तो वो एक कैलेंडर पे लिख दिया। एंड जैसे जैसे डे आते जा रहा है वैसे वैसे बैकवर्ड काउंटिंग उस टेस्ट के लिए। तो इवन इफ आई डिड नॉट फिनिश माय रिवीजन, आप मेरे टेस्ट देख सकते हो, मैम की वेबसाइट पे बहुत गंदे आंसर्स लिखे हैं मैंने, एंड बहुत सारे पेपर्स छूटे भी हैं मेरे। सो आई वॉज वेरी डिसिप्लिन। 3 hours पेन डाउन प्रिंसिपल, 3 घंटे हो गए पेन नीचे, डजेंट मैटर कितने क्वेश्चंस बचे हैं, डोंट गिव योर सेल्फ दैट फेक सेटिस्फैक्शन कि चलो मैं तो 3.5 घंटे में कर ही लेती हूँ, मैं 3 hours 20 minutes में कर लेती हूँ। प्लीज़ फील दैट कि मेरा पेपर ख़त्म नहीं होता है। आई यूज टू गेट वेरी डिसहार्टन कि आज फिर पेपर ख़त्म नहीं हुआ। तो फाइनली जब लास्ट 4 टेस्ट दिए थे तो वो पेपर कंप्लीट हो गया था, एंड फाइनल डे मेरा पेपर 5 मिनट पहले हो गया था। उसका भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि पेपर्स भर चुके हैं, अब आप कुछ कर नहीं सकते हो लास्ट 5 minutes में। सो आई वाज जस्ट सिटिंग देयर एंड चिलिंग कि ठीक है, आई एम हैप्पी माई पेपर इज कंप्लीटेड। सो प्लीज हैव दैट काइंड ऑफ अ डिसिप्लिन इन योर प्रैक्टिस दैट 3 hours are up, see that in your watch, put your pen down, divide your 3 months like this with respect to your tests, because some people can function without tests. Many friends don't write mocks at all and they do very well in the final day, but I was very different. I think my strategy was टेस्ट तो देना ही देना है क्योंकि प्रीलिम्स पढ़ के एक बेसिक नॉलेज हमारी हो चुकी है, तो कैलेंडर में वो टेस्ट्स का डेट डिवाइड कर लें, हर 5-6 दिन, हर हफ्ते में 1-2 टेस्ट दे दें, एंड उसका फिर बैकवर्ड पढ़ाई करें। वन मोर क्वेश्चन, लाइक इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए नॉर्मली लोग कहते हैं कि फिर से कोर्स रिवाइज करें, बट आई ऑलवेज बिलीव कि न्यूज़ पेपर और दैट, तो इंटरव्यू के प्रिपरेशन में व्हाट शुड बी देयर मेन सोर्स, कुछ इंटरव्यू के ऊपर बताओ। So fortunately I had 3.5 months for my interview. Result was out in December and मेरा इंटरव्यू 18th April को था, तो काफ़ी टाइम मिला था
ये पता था कि कुछ गड़बड़ नहीं कर सकती हूँ. आई विल हैव नो एक्सक्यूज कि मेरा इंटरव्यू पहले दिन था, मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी, ये बहुत नया है. तो आई वॉज अगेन वेरी स्ट्रैटेजिक अबाउट इट. आई स्पोक टू अ लॉट ऑफ पीपल हु हैड सम इंटरव्यू एक्सपीरियंस फ्रॉम द लास्ट टाइम. So, as per my understanding, only 3 things are very important. Firstly, your peer group. I had a group of 5 people and I'm immensely thankful to that group because that was a very healthy environment. कोई बहुत unhealthy competition नहीं था. I used to help them with the points. They used to help me with new points. तो वो एक healthy peer group होना बहुत ज़रूरी है जिनके साथ आप सीख सकते हैं. Don't look at your friends too much as competition and don't be very petty about it कि मैं अपने notes नहीं दूंगी और ये वाला point मैं अपने पास बचा के रखूंगी. किसी का पेपर किसी और के नोट से क्लियर नहीं होता है, सबका अपने हिसाब से ही क्लियर होता है. डोंट बी पेटी अबाउट इट. किसी और को हेल्प करके उससे 10 हेल्प मिल भी जाती है कई बार. सो इन्वेस्ट इन योर फ्रेंड्स ऑल्सो. वन इज योर पीयर ग्रुप. सो वी यूज टू फॉर्म अ पैनल. 4 फ्रेंड्स मुझसे क्वेश्चन पूछते थे एक एक करके बहुत प्रोफेशनली और मैं भी उन्हें आंसर करती थी कि येस सर टुडे वी हैव रेड दिस एंड येस मैम इफ माई फ्रेंड इज आस्किंग. सो दैट प्रोफेशनल जूम call was scheduled every day at a fixed time. Second thing, I would say newspapers are very important. Every line of the newspaper I have read and I have spent 6 hours every day just on newspaper. One, I used to read the Indian Express and two, because I was coming from an economics background, मैं मिंट पढ़ती थी. तो इन दोनों न्यूज़पेपर्स की एक एक लाइन, चाहे वो स्पोर्ट्स सेक्शन हो या कुछ कहीं एनकाउंटर हो गया, कुछ हो गया, ऐसे न्यूज़ हो जो कि प्रीलिम्स में यूज़ नहीं होता है बहुत ज़्यादा. तो दूसरा न्यूज़पेपर एंड ऑल हेडलाइंस ऑफ ऑल टॉप नेशनल न्यूज़पेपर्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल. सो दो 17 डेज ऑफ अप्रैल, क्योंकि 18th को इंटरव्यू था, तो 17 दिन सारे नेशनल न्यूज़पेपर्स का जस्ट हेडलाइन गो थ्रू कर लिया कि कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है देश में जिसके बारे में मुझे पता ही ना हो. वहाँ पे मैं बिल्कुल ही क्लीन बोल्ड हो जाऊँ वहाँ जाके कि ऐसा भी कुछ हो रहा है, मुझे वो शॉक नहीं लगना चाहिए. सो ऑल नेशनल न्यूज़पेपर्स का जस्ट द हेडलाइन फॉर 15 डेज. एंड लास्टली मॉक इंटरव्यूज. दे हेल्प यू इन द सेंस दैट आई हैव सीन इन माई इंटरव्यूज माई पोस्चर वॉज नॉट करेक्ट. तो थोड़ा सीधे बैठना है. दैट आई स्पीक वेरी फास्ट, तो थोड़ा धीरे बोलना है, थोड़ा पॉजेज लेने हैं. तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप अपना वीडियो देख के बहुत सीख जाते हैं. पर्सनालिटी तो बदलती नहीं है 3 महीने में, तो मैंने वो ट्राई भी नहीं किया कि आई शुड ट्राई टू चेंज माई पर्सनैलिटी और हाउ वॉट आई नो एंड हाउ आई नो. बट आई जस्ट फिक्स्ड दीज लिटिल थिंग्स दैट आई शुड सिट स्ट्रेट एंड आई शुड स्पीक वेरी फॉर्मली विद द बोर्ड. सो एंड वन थिंग, मतलब बहुत सारे बच्चों से वही होता है कि एंजाइटी मैनेजमेंट है, पर एंजाइटी इज वेरी नॉर्मल, फाइन. सो हाउ टू हैंडल. अर्चिता, यू वांट टू आंसर? I think I still don't know how to handle anxiety, so might not be the best person because I think this is UPSC's and the preparations gift to me. I still get anxious on small things. I just feel anxiety sometimes. So I think this was again a learning experience because I used to think that, what's there to be anxious about? It's just an exam. We've written JEE, we've written AIEEE back then. I came from a background when competitive exams weren't that big a deal for us, especially for engineers. वो ऐसा लगता था OMR में गोले तो बनाने हैं, वो तो बना लेना चाहता है, या फिर मेंस बोर्ड्स दिए हैं, हर चीज रिटर्न ही करी है, ना एंशियस होने की क्या बात है. या फिर इंटरव्यूअर ही जाके बस किसी मतलब यू जस्ट हैव टू गो एंड टॉक टू सीनियर पीपल एंड इसमें एंशियस होने वाली कोई बात नहीं है. ऐसा मैं शुरू में सोचती थी 2019 में. And I think today, I know that I had a lot of anxiety issues during the preparation. So I would just say again, पहले मुझे लगता था something different is happening to me because I was living under the rock. मैं ORL नहीं आती थी, मेरे कोई friends नहीं थे जो prepare कर रहे थे UPSC के लिए. Most of my friends were in the United States, earning in dollars. So I used to just think कि यार ये मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ हो गया है mental wiring issue मेरे दिमाग में. और बाकियों के साथ तो ऐसा नहीं होता है. किसी टॉपिक को बात करते हुए नजर भी आया था उस टाइम की, somebody is talking about mental health or anxiety or things like that. So I think when I talked to a lot of people, including Nishita, I don't think we talked about anxiety as such, but I could get that बहुत सारे लोगों को या mostly सबको ही UPSC की वजह से anxiety होती है. So first satisfying factor is कि मेरे साथ अकेले नहीं हो रहा है, सबके साथ ही हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है, उसके साथ भी हो रहा है. And I just identified, I mean, biologically speaking, I had anxiety from coffee, so I stopped, I avoided coffee. मुझे पता चल गया था कि उससे एंजाइटी ट्रिगर हो जाती है. सो अगेन सेल्फ अवेयरनेस जो UPSC एग्जाम में चाहिए वही आपको अपने साथ भी चाहिए.
and just like streamlining anxiety, workout करिए, लोगों से बात करिए. I think that's how you handle. या फिर बहुत problem है तो फिर medical help. I think we should end the question and answer session because they must be tired. और जब से result आ रहे हैं शायद and Ishita and all they are consistently doing this. And अगर एक जरूरी बहुत जरूरी क्वेश्चन आप पूछ लीजिए बोलिए. राम राम मैडम जी. मेरा क्वेश्चन ये है जी, हम घर रहते हैं जी, अब पता लगता है घर पे बैठ के कि यूपीएससी का अब ओआरएम है. अब मैं हमारे घर वाले जी कोचिंग में एडमिशन कराते हैं, बेस्ट कोचिंग में. मैम मेरा क्वेश्चन रिलेटेड जीएस है. मैम हमारा कोचिंग में एडमिशन हो जाता है, हम पूरा उस पर रिलेटेड हो जाते हैं कि हम जो भी मैटर कर रहे हैं, जो भी कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं, हम उस पर स्टिक रहे. बट मैम अगर हम कुछ कोचिंग देखते हैं कि हम जिस कोचिंग में जाता हूँ उसमें ऐसा है मैम कि कुछ कुछ चीजें मैम जो टीचर्स हैं वो सारे हैंड आउट पे से पढ़ा रहे हैं. हमें मैम हैंड आउट दे दिया और सामने हैंड आउट है और हम उसमें से रीडिंग करा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ पा रहा. और दूसरा मैम कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि जिसके फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करता हूँ कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, उसके मैम 6 लेक्चर्स हैं और मैम ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स तो मैम 6 लेक्चर्स में पूरा कंप्लीट नहीं हो सकता सिलेबस. और मैम जो आईआर है ये तो आप कोचिंग के मैनेजमेंट से पूछेंगे. एक्चुअली मैं इससे पूछ रहा हूँ कि मैम जैसे मैम ने भी कोचिंग ली है तो मैम ने कैसे मैनेज करा. देखिए कोचिंग को आप गाइडलाइंस के फॉर्म में लीजिए. आपके अपने पढ़ने का जो तरीका रहा होगा और उससे सक्सेस मिल रही होगी, उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं. ठीक है. और आवर माइंड ओनली टेल्स हम क्या सही कर रहे हैं क्या नहीं गलत कर रहे हैं. आपको खुद पे वो कैपेसिटी डेवलप करनी होगी. अगर लग रहा है कि काम नहीं कर रहा है तो पैसे के समय मत बर्बाद करो. समय इज मोर वैल्यूएबल. ठीक है. तो ऐसे नहीं है मतलब ब्लाइंडली तो कहीं भी कुछ भी नहीं फॉलो करना चाहिए. अल्टीमेटली यू शुड अप्लाई योर माइंड एंड यू शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर डिसीजंस. बट अब दूसरी बात मैम जैसे हम जो सिलेबस कर रहे हैं हम उसमें सिलेबस ठीक कैसे रखें. इसमें सिलेबस मैम जैसे कि मैम कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं मैम, अगर माइक्रो एनालिसिस भी देखते हैं बुक्स का तो मैम उसमें क्या है, उसमें कुछ टॉपिक्स लिखे नहीं है बट मैम कुछ टॉपिक्स से प्रीलिम्स में पीवाईक्यूज में पूछे हुए हैं. मैम हम उनसे डील कैसे करें. सो वेरी वैलिड क्वेश्चन, बिकॉज जब हम कोचिंग जाते हैं तो 2.5 घंटे जीएस की कोचिंग होती है, 2.5 घंटे ऑप्शनल की होती है और टॉपर्स आके बोल देते हैं सिर्फ 8 घंटे पढ़ाई करो, तो 5 घंटे तो यहीं चले गए हैं. तो वेरी वैलिड पॉइंट. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज योर टाइम एट दैट टाइम. कोचिंग क्लासेस स्पेशली जीएस की जितनी हैं आप देख लें कि आपके लिए क्या रिलेवेंट है क्या नहीं है. क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया था, थोड़ा इकोनॉमिक्स का नॉलेज अच्छा था, तो मैं ज़रूर एक बार देख लेती थी इस क्लास में क्या कवर होने वाला है. अगर मुझे आता है सिर्फ हैंड आउट से रीडिंग हो रही है तो शायद मेरा टाइम बेटर यूटिलाइज हो सकता है. तो अब कोचिंग में आ गए हो, ये मत सोचो कि ये कोचिंग कंप्लीट करनी है. आपको अभी भी एग्जाम पे फोकस रखना है. जो भी आपके एग्जाम में हेल्प करे वो करो अभी. तो जो भी क्लासेस प्रायोरिटाइज कर सकते हो सब्जेक्ट वाइज कुछ स्किप कर दो, बट ये नहीं कि स्किप करके घूम रहे हो. वो टाइम यूटिलाइज करके पढ़ लो वापस जाके. एंड टाइम मैनेजमेंट ट्राई टू पुट इन 3-4 आवर्स आफ्टर योर क्लासेस. एंड जो वीकेंड्स अगर फ्री मिल रहे हैं तो 4-5 घंटे, वीकेंड्स पे कहीं 8 घंटे 9 घंटे कर लिए. तो आई थिंक फिर यू विल बी एबल टू इवैल्यूएट योर सेल्फ बेटर कि कितना मैं कवर कर रहा हूँ और कितना करने की ज़रूरत है. So, I think ये जो वीडियोस इवन बहुत सारे लोग देखते हैं, फैमिली मेंबर्स भी देखते हैं. And there is always a role of family because for success entire ecosystem is required. आपके कोचिंग का सिस्टम हो या फिर फैमिली का सिस्टम हो. तो मैं इशिता की मदर से रिक्वेस्ट करूंगी कि बहुत सारे पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, तो आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहती हैं. पहले तो बेस्ट विशेस आप सभी को, क्योंकि आप सभी में मुझे फ्यूचर इंडिया दिख रहा है. मैं आप लोग के नाथ और करते क्वेश्चन आंसर में से ऊपर थोड़ा हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में ही मैं नहीं उलझ कर रह जाती, क्योंकि मैंने देखा है इसका स्ट्रगल 2-3 साल तक ये
So there are so many things which keep on happening. और मैं जो भी इन्होंने 75-25 कितना इन्वेस्ट टाइम पढ़ने के लिए कहा, उसके अलावा मैं बस यही कहूँगी कि आप खुद से अपने ऊपर 20% जो भी टाइम है आपका खुद पे इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आई हैव सीन कि जब आपका बॉडी स्ट्रांग रहेगा तो भी आपका मेंटल हेल्थ भी स्ट्रांग रहेगा। और खुद को अच्छी देखभाल कीजिए, ये एक दिन का एग्जाम नहीं है, तो इसलिए आपको अपने गोल पे, अल्टीमेट गोल पे फोकस करना है। छोटी मोटी चीजें, घर में बीमारी, आप बीमार, ये बीमार, शादी वादी, वो सब चलता रहता है, कुछ रुकता ही नहीं। तो इसलिए जस्ट फोकस, आपने बहुत बड़ा लक्ष्य प्लान किया है, just stick to your goal and definitely all of you will win. My best wishes to you. Every Indian mother will always emphasize on I think मेट्रोपॉलिटन एरियाज में तो नहीं, लेकिन ग्रामीण परिवेश में भी बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, और अक्सर लड़कियों पर एक प्रेशर देखा जाता है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, और लड़कियों के पर एक प्रेशर रहता है कि शादी नहीं करनी है, उसके बाद जो पढ़ना है, ये सब चीज़ें हैं। तो आई थिंक every mother, every parent, they should support their children, their daughters, and even those who are from the rural background, and even we have so many results from them. So support of family, आप अपने बच्चों को सपोर्ट करिए। मैं इस मंच से सभी पेरेंट्स को यही कहना चाहती हूँ, बच्चों को सपोर्ट करिए, उनके ऊपर ट्रस्ट करिए, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, उनके फ्रेंड्स बनिए, और they will do something good. So have trust on them. This is what I think. Satya Prakash has organized a cake. यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। एक शायरी माँ के लिए। क्योंकि माँ विषय काफी डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, तो हमारे बीच एक और मदर हैं, मैं उन्हें भी बुलाना चाहूंगी, और आप आइए प्लीज। तो और इनकी पर्सनल स्ट्रगल है, बहुत मुश्किल पर्सनल स्ट्रगल है, वो मैं अभी नहीं उपयोग समझती हूँ, लेकिन मनु है, इनके आईसाइट नहीं है, लेकिन मदर इज विद हिम लाइक अ पिलर, और इन्होंने इस साल पॉलिटिकल साइंस, ही इज डूइंग सिविल सर्विसेज, अभी प्रीलिम्स तो दिया है, वी गिव ऑल बेस्ट विशेस टू हिम, लेकिन इन्होंने नेट JRF में भी टॉप किया है पॉलिटिकल साइंस में। बच्चे के लिए इतनी उन्होंने बातें, कंसर्न, सब कुछ किया, और मतलब आई थिंक वो पिलर जैसे रहती है, तो हमारी बहुत शुभकामनाएं कि अगले साल मनु यहाँ पे जरूर हो। तो चलो सुनाओ इशिता एंड अर्चिता, बोथ ऑफ यू माँ के ऊपर शायद। Since ma'am was talking about health, तो माँ का यही कंसर्न रहता है, UPSC सेकेंडरी हो जाता है, and health is the prime thing. So उस पे एक लाइन है कि वो जब खाना परोसती है
तो प्यार बढ़ा देती है। मैं रोटियां कम करता हूँ, माँ आकार बढ़ा देती है। Thank you so much. I think you can share the Yes, ma'am. Come. I just. Ma'am, please come. Ma'am, please come.